थैंक यू डॉक्टर सईद। हमारे बीच पॉपुलर यूथ आइकॉन बन चुके ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मौजूद हैं। विथ हिज इंस्पायरिंग डायनामिज्म एंड डेडिकेशन ऑनरेबल श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी एनर्जाइजेस द यूथ टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। आपसे हमारा आग्रह है माननीय कि कृपया जोश और उत्साह से भरे इन युवाओं को संबोधित करें। Minister of State for Home Affairs, Youth and Sports, Shri Nisit Pramanik ji, and our guest of honor for today's program, Member of Parliament from Australia, Ms. Zaneta Mascarenhas, Dr. Asif Saeed ji, Mrs. Meeta ji, ministers from the Government of India, ministers from the Madhya Pradesh government, elected representatives, my dear brothers and sisters, friends from media, नमस्कार। मैं सबसे पहले तो सभी प्रवासी भारतीयों का अपने ही देश भारत में इंदौर में आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बार नहीं 6 बार लगातार इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर, द क्लीनेस्ट सिटी चुना गया है और ये सरकार और समाज दोनों के सहयोग से ही हो पाया है। मैं बहुत बार इंदौर आया, स्वच्छ तो बहुत बार देखा, पर भारतीय आए तो इतना सुंदर बनाने का काम भी और इसको 4 चांद लगाने का काम भी यहाँ पर हुआ है। मुझे आशा है कि आपका ये प्रवास बहुत अच्छा रहेगा। And let me again welcome you all to the युवा प्रवासी भारतीय दिवस. We all have gathered here today to mark the day when the most iconic Bharatiya Pravasi, a lawyer, a social activist, a visionary, a writer, a nationalist, and a statesman par excellence, one whom the nation, Shri Mahatma Gandhi, had returned back to India from South Africa almost over a century, 108 years ago. और 108 का महत्व तो हिंदू समाज में बहुत बड़ा है। मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन 108 साल पहले महात्मा गांधी इसी धरती पर वापस आए थे। And I take great pride in addressing and welcome you all to India. India is a land of thousands of years of civilizational history, spirituality, which gave the world Shunya, and one which is today emerging as the spotlight for the world in software, space technology, and socially adopted landmark digital transformations. India is 1/6 of the humanity. In other words, 1 in every 6 person in the world is an Indian. Our youth is 60% of the population. In fact, you would be surprised to note that the median age of Indian diaspora in many countries around the world is less than that of other foreign-born and immigration populations there, making Indian diaspora youth a sizable force in several countries to reckon with. The Indian diaspora is hardworking and are go-getters in their fields. Your spirit is unparalleled and unflinching. Your achievements are tale of triumphs against the odds in a foreign land. Indian origin people have displayed pragmatism, determination to prove their worth and found solution to some of the most pressing problems on the planet. Needless to say that some of the brightest minds of Indian origin have played a strategic role, and especially in the success of tech powerhouses across the globe with their unparalleled innovation and infinite talent. The list of Indian origin CEOs is endless. Similar is the list of Indian origin political leaders across the world. But despite the distance of sand, seas and shores
there is something that binds us all. Something special in our heart that skips a beat every time we connect with India. Be it through food, music, movies, trade or travel, I would like to point out here that the Indian diaspora youth have some unique and special qualities that are worth underscoring. They are actually inclined to pursue higher educational qualifications and climbing up professional ladders in their countries of domicile, even as they pursue their dreams and embrace their new country as their new homes. Indianness beats in their heart. आप चाहे उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, अपने सपनों को साकार करने के लिए दूसरे देश में पसीना बहा रहे हो, लेकिन आपके दिल में भारत बसता है और भारत के लिए आपका दिल धड़कता है. The concept and theme of Youth Pravasi Divas is rooted in the Vasudev Kutumbakam, a phrase which embodies the essence of peaceful coexistence where the whole world is one family. Friends, today India's rising global role and presidency of G20 revolves around this very theme of one earth, one family, one future under the able leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. Let me pause here and ask you if you have noticed Prime Minister Modi ji's previous address to the diaspora began with the phrase, Mere Pyare Deshvasiyo. Do you know why? It is so that you are all reminded that no matter where you are in the world, India loves you, respects you and is proud of your achievement. आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें, तो मोदी जी ने मेरे प्यारे भारतवासियों इसीलिए कहा कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें, कुछ भी उपलब्धियां हासिल कर रहे हों, ये याद करवाता है कि भारत तुम्हें प्यार करता है, सम्मान करता है और आपकी उपलब्धियों पर गर्व करता है. Over the next 3 days, we will recognize, celebrate your journey and envision our hopes for India at Amrit Kaal, that is India at 100. You will witness invigorating dialogues, plenary sessions on pressing and pertinent subjects and cultural programs. We will also commemorate the valuable contribution of the exemplary Indians spread all over the world like seeds of hope and affirmative action. A unique digital exhibition is on display showcasing the contribution of overseas Indians in India's historic freedom struggle, wherein each one of you will be able to walk through and soak in breathtaking sights of our land has to offer. Further, I'm happy to state our government has changed the attitude towards Indian diaspora. The honor and respect that our diaspora deserves is reflected through the importance we give towards ensuring engagements involving them during our official visits and beyond. In recent years, a range of policies have been launched by the Government of India to harness the energy and ideas of our diaspora Indians and connect them to India's youth, and with India's own youthful demographic success story. These initiatives include the Know India program to expose diaspora Indian youth to various aspects of contemporary India and its vibrant art, heritage and culture. The scholarship program Gyan, which is a global initiative of academic network. The Vajra faculty scheme, which aims to bring a strong international connect to the R&D ecosystems to India. The Mission Shodh Ganga, Global Alliance for New Generation Acceleration, scholarship program for diaspora children and Indian technical and economic cooperation. Our efforts to link up and facilitate ties between the Indian startups and young diaspora innovators and investors based in their countries of domicile are also generating cross-pollination of ideas. Our vision in the Government of India is to see a two-way flow of ideas and capital between India's own rising youth and their diaspora counterparts from around the world. Moving on,
The 96th edition of the Mann Ki Baat, the last and final of 2022, Honorable Prime Minister Modi spoke about how in 2022 India completed 75 years of her independence, and this is very year Amrit Kal commenced. The Prime Minister highlighted that 2022 was the year when the entire country gained a momentum despite the looming threat of COVID, rising geopolitical tensions and shaky global macroeconomic indicators. India came together to outperform other major economies on various fronts. This past year, India attained the status of world's 5th largest economy. हम जिन्होंने हमारे ऊपर 200 वर्ष राज किया, इस बार उनको पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का काम किया है। और युवाओं के बीच में तो मैं शिवराज जी, जयशंकर जी, ये कहना चाहता हूं, ये भारत के युवाओं ने ही पिछले 8 वर्षों में भारत को दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बनाने का काम भी किया है। 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स, 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में हो गए हैं। जहां दुनिया कोविड से लड़ रही थी, भारत के युवा अपनी स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा देने का काम कर रहे थे। आपदा के समय भी अवसर की बात युवाओं ने दिखाई और हमारी 50 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा भी आपदा के समय मिला। यह दिखाता है भारत के युवाओं की क्षमता क्या है। भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा आकर्षक एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, जहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शंस दुनिया भर में होती हैं। अगर मैं इंडिया के यूपीआई भीम प्लेटफॉर्म की बात करूं तो 782 करोड़ ट्रांजैक्शंस एक ही महीने में होना और 12,82,000 करोड़ की ट्रांजैक्शंस होना, ये दुनिया में सबसे बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अगर मैं किसी एक प्लेटफॉर्म पर हुई तो यूपीआई भीम भारत ने करके दिखाया, जो विकसित देश भी नहीं कर पाए हैं। और भारत साइंस एंड इंजीनियरिंग की पीएचडी अवार्ड करने में भी पीछे नहीं रहा। दुनिया में 3रा रैंक भारत को पीएचडी अवार्ड में करने में साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिला है। और हमारे इस क्षेत्र में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा भी करने वाले हैं। और इंडिया ने अपने मोबाइल सब्सक्रिप्शन पे भी एक बहुत बड़ी प्रगति देखी है। अगर आप देखेंगे नंबर्स किस तरह से बढ़ा है, इंटरनेट कनेक्शन जो 2014 में 250 मिलियन थे, वो बढ़कर 2022 में 900 मिलियन यानी कि 25 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ हो गए। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन 60 मिलियन से बढ़कर 810 मिलियन हो गए। ये दिखाता है कि भारत में इंटरनेट की क्रांति किस तेजी के साथ आ रही है और भारत के युवा और भारत का हर व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करके टेक्नोलॉजी कैसे जुड़ रहा है। यही नहीं, आपदा के समय हम दुनिया पर निर्भर नहीं, मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। तभी तो भारत ने 220 करोड़ वैक्सीनेशन करने का काम किया, जो दुनिया के देश सोच भी नहीं सकते थे, भारत के लोगों ने करके दिखाया है। और सही माने में वसुधैव कुटुंबकम की अगर मैं बात करूं तो दुनिया को एक परिवार मानकर नरेंद्र मोदी जी ने एक ही देश के लिए नहीं, 100 से ज्यादा देशों के लिए वैक्सीन देने का और दवाइयां देने का काम भी हमारे भारत ने ही किया है। तो प्रवासी भारतीयों को इस बात पर गर्व भी होना चाहिए। यही नहीं, हमारा जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, उसके मैजिकल नंबर्स भी $400 बिलियन से ज़्यादा हो गए हैं। और यही नहीं, भारत का अपना इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट जो है, जो हम बात करें इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, वो INS विक्रांत भी हमने आज़ादी के अमृत काल में 75वें वर्ष में भारत को दिया है। स्पेस, डिफेंस और ड्रोन सेक्टर ये नई उम्मीदें लेकर भारत में उभर रहा है और नए नए क्षेत्र इसके माध्यम से खुल रहे हैं। खेलों के क्षेत्र में भारत ने ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स में नए आयाम स्थापित करने का काम किया है। और आत्मनिर्भर भारत के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी पूरा करने का काम किया। आपके बीच में ही यूथ अवार्डीज भी हमारे बीच में हैं, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, स्पिरिट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आप जब आए हैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से बाकी युवाओं से जरूर मिलिए और उनके साथ देश को घूमने का प्रयास अवश्य कीजिए।
आप जितना भारत घूमेंगे, भारत की विशेषताओं को भी जानेंगे, भारत की समस्याओं को भी जानेंगे, और कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान करने में भी आप एक बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं. Rather than taking more time, I'll end with a quote from the Honorable PM. He once remarked that when it comes to our diaspora, be it non-resident Indians or the persons of Indian origin, we don't look at the color of the passport, but only the blood relationship. हम पासपोर्ट का रंग नहीं देखते, खून का रिश्ता देखते हैं. और कहीं ना कहीं आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, ये खून का रिश्ता हमें एकजुट करता है, भारतीयता का रिश्ता हमें एकजुट करता है. And Indians, be it in India abroad, have always held their heads high and hearts open to lead the world in the bold and bright future that awaits us. With these words, I invite you to innovate, invest, and initiate your ideas in India. So welcome to the Youth or Yuva Pravasi Bharatiya Divas. And once again, I just would like to remind you, you are going to explore this beautiful city of Indore, Mahakal Lok, ओंकारेश्वर मंदिर. आप भारत के समृद्ध और गौरवशाली इतिहास को देखिए ही, लेकिन रात को 10 बजे से सुबह के 2 बजे तक इंदौर के सराफा बाजार में जाना मत भूलिए. अगर आप सराफा बाजार में गए बिना चले गए तो आपकी ये विजिट बिल्कुल अधूरी है. और अगर आप एक बार चले गए तो समझ लीजिए अगली बार इंदौर में, जहां साथ में लगते महाकाल लोक ओंकारेश्वर मंदिर से बहुत सारे आकर्षण आपके लिए होंगे, उनमें से सराफा बाजार भी आपको बार बार निमंत्रण देगा. एक बार फिर आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत. जय भारत, जय हिंद. बोले भारत माता की, भारत माता की. बहुत बहुत धन्यवाद.